Hi everyone. If you are a new time investor और पहली बार स्टॉक मार्केट और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने आए हैं, then it is very important for you to understand कि what is the actual difference between different mutual fund schemes. आप सबने सुना होगा कुछ large cap mutual fund schemes हैं, कुछ mid size है, कुछ small size है. So today I'll tell you the actual difference between all these three mutual fund schemes. So according to the rules which are set by the SEBI, which is Security and Exchange Board of India, companies listed on the stock exchange are basically ranked based on their market capitalization. So firstly, let's talk about large cap mutual fund schemes. Large cap companies are the big fish in the market. They are the top 100 companies which are listed on the stock exchange and they have a market cap of more than 20,000 crore each. Like we have Reliance, HDFC Bank, Infosys, TCS, ICICI Bank. ये वो well established companies हैं जिनका profitability और sales growth keeps on growing over a period of time. So if you are a conservative investor, अगर आप पहली बार stock market में investments कर रहे हैं तो it's better कि आप कोई ऐसा large cap mutual fund ले जो over a period of time grow भी करता है और आपका mutual fund portfolio भी grow करेगा. So opt a large cap mutual fund schemes if you are investing it for the first time in mutual funds. नेक्स्ट वी हैव द मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स. मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनकी रैंकिंग होती है फ्रॉम 101 to 250th इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप फ्रॉम 5,000 to 20,000 करोड़ ईच. इन कंपनीज का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता है लेकिन ये ज़्यादा रिस्की है कंपेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स. The last is the small cap companies. Small cap companies at the other end of the extreme. They basically rank from 251 and below and the market cap is also below 5,000 crore. So basically ये new startups हैं, new companies हैं which are in the developing stage. Obviously अगर ये अच्छा perform करेंगी then you can make good returns but with high return comes high risk. So to summarize it, if you are a first time investor और आप थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, डरे हैं, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, देन आँख बंद करके अच्छी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए. अगर आप थोड़ा हाई रिटर्न चाहते हैं और पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हैं, टाइम पीरियड भी 5 साल 7 साल है, then obviously you can choose a mid-cap mutual fund schemes. And if you are investing for retirement, for child education and goal is more than 10 years, then small cap mutual fund schemes में investments करिए.